Welcome to the week that was by Zerodha Varsity. I'm Asta Khurana, and before we deep dive into the news of the week, let's have in our prayers the visionary and legendary industrialist Mr. Ratan Tata, who passed away this week. India indeed lost its Ratan. May he rest in peace. Let's start with the Indian markets, and first up we're going to talk about the interest rate news that came out on 9th October. RBI have left these interest rates unchanged at 6.5% for the 10th consecutive time on the ground of inflation. ये food prices में जितने भी price rise हो रहे हैं उसकी वजह से ये inflation बढ़ रही है. Moving on, next up is the startup story. पहले इंडिया के बहुत से स्टार्टअप्स वर रजिस्टर्ड अब्रॉड, बट नाउ दे आर शिफ्टिंग बैक टू इंडिया एंड इस प्रोसेस को रिवर्स फ्लिपिंग कहते हैं थैंक्स टू द न्यू रिफॉर्म्स. जहां पहले 12 से 18 महीने लगते थे फॉर दिस रिवर्स फ्लिपिंग, नाउ इट ओनली टेक्स 3 to 4 months बिकॉज अब NCLT की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती. Companies like Razorpay, Pine Labs and Zepto are a few examples who are in the process of this reverse flipping. Moving on, let's talk about the much awaited Hyundai Motors India IPO, जिसकी finally date आ चुकी है and you can apply for this IPO between 15th to 17th October. इसका price band है between 1865 to 1960 and lot size is 7 shares का. इसके अलावा the issue size is for 27,000 crore, thus the biggest, and this entire issue is an offer for sale. अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, बिकॉज एज यूजुअल द रिजल्ट सीजन इज स्टार्टेड टू कम अप एंड सबसे पहले रिजल्ट आया है TCS का. Their revenues have increased by 7.6% and the increase in their net profit is of by 5% on YOY basis. इसके अलावा कंपनी has also announced a dividend of 10 rupees per share. Talking about the global news, सबसे पहले यूएस के इंडेक्स की बात करते हैं जो कि लास्ट वीक नियर ऑल टाइम हाइस पर क्लोज हुआ एंड द रीजन फॉर द सेम वाज देयर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा. इफ यू रिमेंबर, कुछ टाइम से हम बात कर रहे थे दैट अनएम्प्लॉयमेंट की काफी प्रॉब्लम चल रही है, बट दैट सीम्स टू बी ईजिंग आउट नाउ. उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नाउ एट 4.1% एंड सितंबर मंथ में उन्होंने 2,54,000 जॉब्स और ऐड करी हैं. Now lastly, let's talk about the search engine. I know search engine सुनते ही आपके दिमाग में Google का नाम आया होगा, but Google is facing a problem and a shrinkage in their market share. Their search advertisement market share में shrink आ सकता है and it can fall below 50% by 2025. The reason for the same is आप normal चीज़ों के लिए बेशक Google के search engine को use करते हो, but when you are searching for a particular product, you might go on that particular website, for example Amazon. And ऐसे ही similar platform से Google is facing a challenge. That's all for this week. See you in the next one. Bye-bye.